वो इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट किताब की बात हो रही है, इमाम ज़रनोजी की लिखी हुई। तो उसमें हम द बिगिनिंग ऑफ स्टडी, इट्स अमाउंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको देख रहे थे और इसमें हमने कंसिडरेबल पोर्शन मुकम्मल किया पिछली बारी। और अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये ऑब्वियसली बीच से अब शुरू करना है क्योंकि हाफ ऑफ इट वी कवर्ड लास्ट टाइम। उससे आगे बढ़ते हैं। इब्न अब्बास एक मशहूर साहबा में से एक हैं। ये उनसे एक रिवायत ले रहे हैं कि उनसे पूछा गया था कि कैसे आप इल्म हासिल किए हैं अपनी ज़िंदगी। तो उन्होंने वापस जवाब दिया, विद द एड ऑफ ए टंग फॉन्ड ऑफ आस्किंग। एक ऐसी ज़बान अल्लाह ताला ने मुझे दी थी जो सिर्फ पूछती थी, एंड ए हार्ट फुल ऑफ गुड सेंस। इस वजह से तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को, दे आर कॉल्ड व्हाट डू यू सेयर्स। ये एक अच्छा साइन है to see who is seeking knowledge and who is seeking argument. Usually the ones who seek knowledge, they would start their sentences with, what do you say about this? The others, they would say, what about? और what about ये जो हमारे यहाँ होती है, और they would present an alternate view, or they would start criticizing. और इनको व्हाट डू यू से इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे वुड से व्हाट डू यू से कंसर्निंग सो एंड सो, सो एंड सो। ये उनका रवैया होता है और इख्तलाफ पेश करने का तरीका भी यही है। अदब यही डिक्टेट करता है। एटिकेट डिक्टेट्स whenever you enter a conversation and your position is different from the one who you are learning from or who you are listening to, you present your difference like this. What about? ऐसे नहीं. What do you say about XYZ? I have heard from elsewhere ABCD and I'm not able to understand how to reconcile that with what you said. Could you please throw some light on it? So these are the ways in which you approach. You would realize many a times people have been arguing over things for like months or even decades. So क्लब हाउस पे ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने आपके सामने, काफ़ी सारी बहसें हैं जो पहले दिन पे थी, अभी भी वो वही बहसें कर रहे हैं कुछ लोग, अभी भी वही बहसें, मतलब इट हैज़ बीन गोइंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे शायद आपको हंसी भी आ जाए। जो वो शादियाँ महंगी हो रही है कश्मीर में, अभी भी इस पे बहसें चल रही हैं। कुछ दिन पहले भी मैं एक रूम में गया, वहाँ पे यही बहस चल रही थी। Certain rooms I find where people are still discussing same questions which they have been discussing for like 1 year. Now, how do you explain such a happening? कि ऐसा क्यों है कि क्यों आर्ग्यू करना पड़ रहा है बार बार? Because everyone is taking positions not with this idea of learning. They are there to prove their points, and once you enter a discussion rigid, you leave the discussion rigid. There is little change of heart. जिस रूम में हायरार्की नहीं होगी, जिस क्लासरूम में हायरार्की नहीं होगी, जहाँ पे एक टीचर नहीं होगा, बाकी तालिब इल्म नहीं होंगे, वहाँ पे लर्निंग रेयरली इट वुड टेक प्लेस, एंड दिस हायरार्की may shift. For example, there are two friends who are equally good students or equally bad students, whatever they are same. तो वहाँ पे हायरार्की कैसे वर्क करेगी? हायरार्की वर्क्स, the one who is seeking has to place the one from whom he is seeking at a higher pedestal. कहने का मतलब जो सवाल पूछेगा, he has to place the one who is asking the question at a higher pedestal. और इस नीयत के साथ और इस अप्रोच के साथ, इस एटिकेट के साथ सवाल पूछा जाता है, और सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है। This is not to discourage questions. This is to tell you the etiquette of questioning.
The etiquette of questioning is this. Questioning is important, and you would understand that through this session, okay? And probably why they're called what do you sayers, because they should ask questions. और questioning से इल्म निखरता है. इमाम अबू हनीफा ऐसे अपना इल्म हासिल किया है by posing questions, and he would discuss in his shop. He was a cloth merchant. वहाँ पे he would often discuss. और इस एग्जाम्पल से हमको ये भी पता चलता है कि you can earn your livelihood and simultaneously seek knowledge. Abu Hafs al-Kabir, he also used to work simultaneously while he was studying. But if you remember, we have talked about this before, that ilm हासिल करने का एक इज्जत है उसकी. You should not debase it or abase it. You should not divide your time between study and something else. But here we said कि it is okay to do both the things at the same time. There are two things you should understand here. One is you do not compare yourself to the greats of the religion. Imam Abu Hanifa did so and so, I'll also do so and so. This is gross बेअदबी. You should know your station where you are. So पहले इसको उस वजह से ना कहें. Because he did it, I'll also do it. Taking fruits from the edge of cliff is halal. There is no problem in it. But only the expert does it. You would be asked, no, आप वहाँ से लीजिए. You don't need to go to the edge of the cliff. Imam Abu Hanifa could take fruits from the edge of the cliff because he was that kind of person. You and me, we do not take fruits from the edge of the cliff. We stay in the center. We keep ourselves safe. We do not play with the edges of the religion. That's one thing. The second thing is the necessity. Sometimes life puts on your shoulders necessities which are unavoidable. But unavoidable necessities are no reason that you cannot study. You have to find time for your study. वहाँ पे it becomes necessary for a person to do something which otherwise should not have been done. So knowledge has to be approached with reverence and respect and love and honor. But sometimes it becomes difficult. I do not know. For some of us it might be the case. But generally it is not. So you do not debase. आप लेट के जैसे Avengers देखते हैं वैसे आप नहीं पढ़ते किताब. It is a tragedy of sorts that we have started doing it like that. And that's why learning has been taken away from our hearts. One of the reasons. If a seeker of knowledge must make a living to support his family, then he should do it. आपको इल्म हासिल करना है, लेकिन आपकी औलादें हैं या माँ बाप बुजुर्ग हैं, then what should you do? You should work for your livelihood, but at the same time repeat and discuss your lessons. पढ़ाई नहीं छोड़ सकते. This he should do instead of being lazy. कहने का मतलब, if you are choosing only one, that is a sign of laziness. That's a sign of sloth. अल्लाह ताला ने जो 24 घंटे दिए हैं बहुत है. आप इसमें अपना वक्त निकाल सकते हैं इल्म हासिल करने के लिए. किसी ने पूछा था कुछ एक सेशन पहले भी, फेलियर ऑफ स्कूल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, कि there is so much to do and there is so little time. There is never little time. There is too much ample of it out there. ये कहते हैं कि जिसके पास sound mind हो, sound body हो, there is no excuse in poverty to neglect study and learning. ये बहाना एनफ नहीं है कि गरीबी है मैं पढ़ नहीं सकता. कहते हैं जब तक आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ अक्ल और जिस्म है, आप ये कर सकते हैं. हाँ, आपके लिए प्रोसेस टफ हो सकती है, आपके लिए मुश्किलात हो सकती है, आप दिन में शायद कम पढ़ सकें, पर आप इसके लिए वक्त निकाल सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आप ना पढ़ पाएँ. दैट्स ऑल्सो ओके. इस वजह से टाइम टेबल इन लर्निंग बिकम्स अ मस्ट. Suppose for example you have an exam coming up. 3-4 हफ्ते में एक एग्ज़ाम है आपका, या एक साल बाद कोई बड़ा एग्ज़ाम है, करियर डिटरमाइनिंग एग्ज़ाम है. What should you do at that point of time? Should you simultaneously study something else? For example, religious studies.
or what you want to study. If you are wasting your time elsewhere, then the answer is obviously yes. अगर आप 2-3 घंटे कहीं और वेस्ट कर रहे हैं तो उससे बेहतर तो यही है. But if you are actually studying like 14 hours, 12 hours, and then that is not enough for your exam, then your exam at hand is more important. You do it, you finish it with this near that I want to come back. इमाम ज़रनूजी ने इससे पहले आपको ये बोला कि one, if you eat more so that you can fast more, then it is halal. Otherwise, eating like a glutton is haram. ये उन्होंने कहा था. वैसे ही दौलत के पीछे भागना हराम, लेकिन दौलत के पीछे इसलिए भागना अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए, so that you can spend more on halal things like charity or your own self, your family, you get books, then all of a sudden it becomes a good act. Now the third thing, the in-between one, where you are studying just enough and you have little time, like 15 minutes you get, and that's not enough. What you can do is you can add those 15 minutes over a week, over 6 days. 1.5 घंटा बन गया, 1.5 घंटा एक हफ्ते बाद उसमें इन्वेस्ट करें. संडे पढ़ ले किसी भी दिन. God knows what's your intention and he will increase your chest for it. Next question is, what about a person who possesses wealth? उसका क्या? तो ये कहते हैं, let wealth that is righteously attained benefit the righteous man. दौलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो. इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, अदरवाइज दिस इज अ हदीस. दिस इज अ हदीस फ्रॉम मुस्नद अहमद. इंग्लिश ट्रांसलेशन में नोट्स में लिखा है कि इट्स अ हदीस फ्रॉम मुस्नद अहमद. इन द ओरिजिनल अरबिक ये जस्ट एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल किया गया है. It was said to a learned man, how did you acquire knowledge? He said, through a rich father. By means of his wealth, he supported learned and good men. This was the reason that my knowledge also increased. इसके बाद the next thing is gratitude. ये वाला form of gratitude we have forgotten. ये एक luxury है which everyone cannot afford understanding. समझ आना ये सबके पास की बात नहीं होती है. There are people who struggle to understand. आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपके टीचर. You get it in one go, but there is another student who is trying his best, but he is not understanding it. He is taking like 5 times. आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे who are able to study the same thing in 1 hour, while someone else takes 5-10 hours to study the same thing. ज़्यादा एफर्ट डाल के बार बार उसको रिपीट करके. This is a sign of intelligence, obviously. The person who is more intelligent is able to do it in less time than the one who is not so intelligent. And we know now, intelligence has little to do with your own effort. It is something which either comes through your birth or second through your upbringing, childhood. कैसा रहा था, और दोनों आपके कंट्रोल में नहीं थे. These are blessings from God, both of these things. And you should be grateful for this. And remember one thing, both of these things can be taken away. Both of these things can anytime be taken away. In our hadith sciences, we have ample examples of people we would take hadith from, but in their later life we don't take hadith from them. Why do we not take hadith from them in their later life? Not because khuda na khasta they lost their character, but because they lost their intelligence. They lost their powers of skills of memory. We do not take hadith from them in their later life. So you should be grateful for it. It's not something you have earned, it's something that was given to you. इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मेरा इल्म हासिल करने की वजह, तरीका एक ही है बस, praising God and thanking Him. ये कहते हैं कि जब भी मैं कोई चीज़ समझता हूँ, even if it is a nugget of wisdom, I say Alhamdulillah. This is also forgotten. और ये नहीं हो रही बात कि आप कलाम पाक पढ़ रहे हैं या हदीस पढ़ रहे हैं, सीरत पढ़ रहे हैं. ये मैक्सवेल की इक्वेशन पे भी अप्लाई होता है.
जब आपको वो समझ आती है कि क्या कह रहे हैं, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझा रहे हैं टीचर, नहीं आ रहा समझ आया, प्रेज बी टू गॉड। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ऐसे मेरा इल्म बढ़ा। ये कहते हैं आगे, as such it is necessary in the quest of learning to occupy oneself by giving thanks. And giving thanks कैसे? By tongue. One of the ways is by tongue. Alhamdulillah, shukr Allah ka. By your heart. By your heart, how do you do it by your heart? By humbling yourself when you understand something. Through your hands. Through your hands by lifting others up. And through your wealth by helping others to lift up. It is important to realize that understanding, knowledge and good fortune come from God. ये अल्लाह ताला की तरफ से, हर किसी की किस्मत में ऐसा नहीं होता. There is very interesting thing that happened just now. He used two different words for the same thing, जिसको हम usually synonymously use करते हैं. Understanding and knowledge. It is important to realize that understanding, knowledge and good fortune. So we would usually use these two words synonymously. We would say it's important to realize understanding and good fortune come from God. Or you would say that knowledge and good fortune come from God. This is very important to realize the difference between understanding and knowledge. The difference between understanding and knowledge वेरी, मतलब मैं आपको एक रुडिमेंट्री तरीका बता रहा हूँ पहले. वो ये है कि नॉलेज हार्ड डिस्क के पास भी होती है. बहुत नॉलेज है उसमें. एक टीबी के हार्ड डिस्क में अप टू 1 टीबी का इंफॉर्मेशन हो सकता है. बट द हार्ड डिस्क डज नॉट नो व्हाट दैट कंटेंट इज. इट डज नॉट नो. It does not know its implications. It does not know its meanings. It knows what is inside me is 10010110110. It does not know what it means. Humans can give meaning to things. So humans can understand. Hard disks cannot understand. Don't be a hard disk. Be a human. ये बड़ा rudimentary तरीका था. इन डेप्थ में अगर जाए तो हमने इस पर बहुत बात की है. Those of you who have been here would have a fair understanding. One difference between the two is on the very beginning of the when you seek knowledge, the very beginning, how you seek it. If whatever comes towards you, whatever information comes towards you, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ and you're listening, all of this is information, all of this is increasing your knowledge. You are hearing, you for example got to know about Imam Zarnuji today. You might not have known this name before. You got to know Sull Kaak. That's information, that's new knowledge. Whatever you are hearing, every word that's entering your ears is knowledge. But if you take it in, you do it what Hindus will call Shravan, Manan, Nitidhyasan. You listen to it, you reflect on it, and you try to internalize it. You make it a part of yourself. That's understanding. There's one more difference. Knowledge के लिए नॉलेज सेट का डिफरेंस होना दो बंदों में, तो आपका नॉलेज बढ़ सकता है. फॉर एग्जांपल आप विकीपीडिया का कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, विकीपीडिया के पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपके पास उससे कम थी, तो यू हैव इंक्रीज्ड योर नॉलेज. फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्सन हैज़ टू बी मोर वाइज देन यू. ही हैज़ टू बी अबव यू इन विजडम, not in knowledge. He might have less knowledge than you, but if he is wiser than you, he can pull your understanding. Knowledge, you understand it in one go. To develop your understanding, that means you did not understand it in one go. For understanding to develop, there has to be a difference in understanding. That means to increase your understanding, you have to listen to those lectures, you have to read those books which you do not understand in one go. So knowledge is kind of raw material, and what uses that raw material and where it is applied, that is your understanding. तो इसको ये सारे तरीके हैं. एक एडलर का भी तरीका है, उन्होंने भी इसको डिफ्रेंशिएट किया, बट दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर सिमिलर. इनमें डिफरेंस क्या है? देयर इज वन मोर वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू, दैट नॉलेज इज ऑल द इंफॉर्मेशन यू टेक इन.
whether it is good, right, whether it is wrong, whether it is propaganda. I do think that's knowledge. But when you apply the theory of criticism on it to check the truth of the knowledge as well, then it is understanding. So there are many ways, but you understand the gist of it, that he is writing in 1200 something, and even then this was clear that there is difference between the two. हमारे local custom में कश्मीर में, you must have often heard teachers say it, and others also say it, कि we are literate but we are not educated. But I personally have never heard anyone explain the difference between the two. We somehow understand in our hearts what's the difference, but we are never able to put it in words. So today we have given it words. You can take it from here. As well as from asking God for guidance by supplicating Him and beseeching Him. How many of you have ever tried this? That you fail to understand Hegel, or you fail to understand quantum mechanics, and you pray to God for it. Open my heart towards it. God is not limited to Quran and all of these sciences. ये सारा इल्म खुदा का ही है, ये किसी और का नहीं है. No one ever has invented anything. It's always a discovery of what God has put out there. Everything out there. Law of demand and supply, God placed it in the markets. We only found it. So if you're not able to understand anything in physics, chemistry, biology, sociology, it is one of God's laws you are not able to understand. Ask Him that I'm not able to understand it. Open my heart towards it. And it is God who protects you from error, and it's He who leads you towards truth. However, the people of misguidance, वो क्या करते हैं? उनके जो opposite हैं, what would they do? They admire their own intelligence. वो खुद की तारीफ में पूरा टाइम बताएंगे. They would admire their own opinions. अब ये own intelligence और own opinions को limit ना करे फर्द पे, खुद का opinion और खुद का intelligence, इसको extend करे आगे भी. कैसे? It means that they seek truth only from mortals. वही का इस्तेमाल नहीं करते. कहने का मतलब they only rely on reasoning without revelation of God. Now this is very important and tricky. अक्ल और वही, इसको contemporary Muslim thought में and elsewhere also, Muslims का ही नहीं है मसला, Christians, Hindus, ये सब का मसला है कि अक्ल और वही के बीच क्या हम बैलेंस रखें. I have done a series on it, वो YouTube पे है, Place of Reason in Islam. But for now, let's look at what is being said here. एक फिर से rudimentary way में ये clarify हो जाएगा by the use of word only. From mortals who are weak and rely only on reasoning. सिर्फ और सिर्फ reasoning पे जो यकीन करते हैं, who do not seek any guidance from wahi. देखो, when you seek guidance from wahi as well, it cannot be done without using up. You just cannot do it. अगर आप कलाम पाक भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना, उसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना, ये एक दिमागी एक्ट है. जैसे कलाम पाक से प्रे, अब प्रे का मतलब जो है वो फिजिकल एक्शन जो है प्रे, वो आपके दिमाग में ट्रांसलेट होगी एंड योर माइंड वुड ट्रांसलेट इट इनटू एन एक्शन. सो इट्स अ मेंटल एक्ट. सो यू विल हैव टू रीजन. और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड है. हमारे यहाँ एक और मसला है, एंड दिस इज ट्रू फॉर होल मुस्लिम वर्ल्ड इन जनरल, बट आई ऑलवेज स्पीक अबाउट कश्मीरी कंटेक्स्ट, क्योंकि घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर में क्या हम जाए. तो हमारे घर का मसला भी यही है कि यहाँ पे भी when we try to find solutions to our problems, we go elsewhere, we reason it out. You would see highly intellectual people with good intentions, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे,
I mean it with all humility, nothing to take away from them, 100% humility के साथ. I hear them speak for hours altogether and none of it is from our tradition, none of it. They will speak like hours altogether. And God says in Quran at least at 2 points, and once with admonishing tone and at other place as a directive. At one place God says हमको हुक्म देते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर्बिट्रेटर बनाओ अपने बीच, वहाँ पे सजेशन है. दूसरी जगह एडमोनिशन है कि none of you will have faith until you make prophet the judge concerning over what you dispute. और फिर अल्लाह ताला उसके बाद कहते हैं कि and once the prophet passes a judgment over you, you should find yourself no discomfort from what he judges and you submit in full towards it. This is something we have lost again. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ वैसे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे. शुड वी गो फॉर अ कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ, शुड वी गो फॉर अ कम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ. बोथ द थियरीज ऑफ देयर प्रोज देयर कॉन्स, हम इस पे बहस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, वी कैन रिफायर आवर नॉलेज. बट व्हाट इफ देयर इज अ प्रोफेटिक स्टेटमेंट. मैं व्हाट इफ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, कि ही सेज कि यू शुड बी अ कैपिटलिस्ट और ही यू शुड बी अ कम्युनिस्ट. बहस खत्म होगी ना हमारी. और सर तस्लीम खाम, सर झुका के उसके सामने कि हाँ आपने कह दिया, हम हाजिर हैं, लब्बैक. ये हम नहीं करते. वी डू नॉट सीक एनी हेल्प फ्रॉम आवर ट्रेडिशन. एंड इफ यू डू नॉट डू दैट, देयर इज एन इम्प्लिसिट स्टेटमेंट यू आर मेकिंग दैट द ट्रेडिशन हैज outlived its utility. It is nothing to offer now, which can be true. As an academic, you can say that, okay, Islam was a glorious force 1400 years ago. The Arabs were taken out of their lethargy. They became a great nation. It has outlived its utility. We should limit it to Center of Islamic Studies in our universities. And we should do our research elsewhere. Which can be the case. The Christians did it. The Hindus did it. The Buddhists have done it. We can also do it, I don't mind it at all. But the choice, your heart must be paining saying this or hearing this. My heart is that I say this. Has Islam outlived its utility? Should we close it now and leave it to dark now? Anything. But even that decision has to be taken after thinking about it. Has it outlived? तो और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म वाली बहस, ये हो सकती है दो लोगों के बीच जिनके पास नहीं है आर्बिट्रेटर. जब आपके पास आर्बिट्रेटर है तो फिर आपको ये मसला ही नहीं आना चाहिए. हमारे यहाँ बहसें उन चीज़ों पे होनी चाहिए जो हुजूर ने नहीं एड्रेस की. हम क्रिप्टो करेंसी पे बहस कर सकते हैं. वो कहते हैं ना, हाल दिल किसको सुनाया आपके होते हुए, हम किसी के दर पे क्यों जाए आपके होते हुए. God has left it. In fact, elsewhere God says in Quran that in him you will find the best example. Follow that example. And this is very important. Most of the discussions we see around us, they're all futile from an Islamic perspective. Because they are settled things in Islam. They are 100% settled things in Islam. जैसे यही कैपिटलिज्म कम्युनिज्म वाली बहस. We have ample hadiths and Quranic verses which talk about private property. Pronouns की बहस. You do not self-identify gender because half of the Quranic verses would not make sense after that because it addresses women. It addresses man. Separately, gender-wise. Now, if you can self-identify, then Sayyid or Junaid would say that this verse is for me. Or Mahima or Mushtari would say, no, this verse is not for me, this is talking to woman. I identify as a tape recorder. God. तो आपके यहाँ ये वैसों की ज़रूरत है नहीं. Once you make the prophet your arbitrator. But अक्ल की ज़रूरत उसके बाद भी है. ऐसा नहीं है कि अक्ल has no place. अक्ल has its place. ये
क्रिटिसिज्म जो इन्होंने की है ये उनके लिए की है जो अक्ल को कहते हैं इस सेंस में दैट ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स कैन बी फाउंड थ्रू रैशनल फैकल्टीज। इवन यहाँ तक अभी आप सिर्फ वो दहलीज पे है कुफ्र के, तो भाई ये कुफ्र नहीं है, यू कैन फाइंड ट्रूथ यूजिंग अक्ल, इसमें कोई बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। यू फाइंड थ्रू अक्ल दैट गॉड इज़ वन, तो क्या आपने गलत फाइंड किया? नहीं, आपने सही फाइंड किया। थ्रू अक्ल आपको पता चला कि कलाम पाक कलामुल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं है। What he is actually criticizing is once you place reason above wahi, once you make wahi subservient to akal, this is what is being criticized. So that is something we should as a nation avoid, or else we should take this decision within our hearts and collectively as a community कि Islam has lived its utility and we should give up on it. Okay, fine, it was a great tradition once. These people, they were great, these Saladins and Mahmuds, and we should give up on it. And it's perfectly fine. People have given up on their traditions. You can also do that. For human reasoning does not encompass everything. क्या दिक्कत है रीजनिंग में कि ह्यूमन रीजन हर एक चीज को कवर नहीं कर सकता, जस्ट एज विजन डज नॉट रिवील एवरीथिंग इनसाइड। और ये जो ये बात है ना, ह्यूमन रीजन डज नॉट एनकम्पास एवरीथिंग, दिस इज सटली हिंटेड टुवर्ड्स इन लॉट ऑफ हदीस and directly in Quran. I have talked about this before when God talks about inheritance and shares which you should give to your relatives. God follows that discussion with this verse that you could not have yourself decided who is closer to you. And if you think about that, what is God indirectly telling you? That your reason has a limit. You cannot explore moral truths. You cannot know whether your father is more deserving of affection or your mother. Can you? There is no measuring rod. Had the Prophet not guided us that your mother is 3 times more deserving of affection once she is old as compared to your father? 3 times more. दौलत किसको दे? You know that is not fallacy. You can prove to me कि मेरे बच्चे मेरे ज़्यादा important है than my friends. बट उस इज से आप तब भी ought नहीं डिराइव कर सकते कि दैट्स वाई आई शुड गिव माई चिल्ड्रन माई इनहेरिटेंस. आई से माई चिल्ड्रन आर क्लोजर टू मी, दैट्स वाई आई शुड गिव माई इनहेरिटेंस टू माई फ्रेंड. या एनिमी और फ्रेंड में डिफरेंस. You tell me, for example, I should give my inheritance to my friend, not my enemy. I ask why. You say because he's your enemy. I say no, I'll give my inheritance to my enemy because he's my enemy. I won't give it to my friend. You ask why. I say because he's my friend. That's why I wouldn't give it to him. So you can never derive an ought statement from an is statement. It's called is ought fallacy. क्या करें अब? The Prophet settled it for us. And that's the reason he becomes Rahmatan lil Alameen. Otherwise, you and me would be skeptics and we'd be like dead and rotten discussing. ये कहते हैं, he uses a very beautiful word. These people are veiled from and incapable of highest truth. A veiled from भी technical term है Islamic literature में. Whenever you read veiled, understand it is being talked from a spiritual perspective. Because God says in Quran, it's only I who veil, and it's only I who can lift a veil. Consequently, they go astray and cause others to go astray. They would not go astray, मतलब अकेले नहीं, उस सनम हम तो डूबे हैं, आपको भी डुबाएंगे. It is said, he who knows himself knows his God. ये क्या है इसका मतलब? He who knows himself knows his God. ये कहते हैं जो खुद को जानता है उसको अपनी हर एक कमी पता होती है. They know also the limitations of their knowledge, and that's why they make God their arbitrator on everything. They know the power of God, and he learns not to rely on himself or on his own akal. Instead, he places his trust in God and seeks truth from him. And those who rely on God, he suffices them, and he will guide them in a straight way.
फिर आगे कहते हैं जिसके पास दौलत हो कभी कंजूसी न करना, डू नॉट एवर बी माइजरली, इन फैक्ट इट इज़ नेसेसरी टू सीक रिफ्यूज इन गॉड। ये जब हम एरिस्टोटिलियन निकोमेकियन एथिक्स में देखते हैं ना कि मॉडरेशन में देयर इज़ गुड, फिर उसकी कमी इज़ बैड, उसकी ज़्यादती इज़ बैड। जैसे रेकलेसनेस इज़ बैड एंड कवर्ड होना इज़ बैड। हर जगह लड़ना, जंगजू बनना, तोड़ फोड़ करना, ये भी गलत है। लेकिन आपको कोई कुचल रहा है और आप कुछ ना बोल सके, कुछ ना बोले इज़ ए वर्च्यू, कुछ ना बोल सके इज़ नॉट ए वर्च्यू। तो दैट इज़ वन इज़ ये एक्सेस ऑफ द थिंग, वन इज़ उसका नेगेटिव सेंस में बहुत कम होना उस चीज़ का। सो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग टिमिड, कायर होना। दोनों का जो वो सटल बैलेंस है दैट्स कॉल्ड करेज। ना ही रेकलेस है नहीं। वैसे ही खर्चा करने में अगर ज़्यादा करोगे, एक लेवल पे चले जाओगे, इसको एक्स्ट्रा वैकेंस कहते हैं, अल्लाह ताला को नहीं पसंद वो। दूसरे साइड से करोगे, कम करोगे, तो उसको कंजूसी कहते हैं। अब इस सब में आप और मुझ जैसे, हम जैसे लोग, मतलब आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एवरीवन, देयर आर गुड पीपल ऑलवेज अराउंड, तो जिनसे गलतियां हो जाती हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू बी दैट perfect, but we are not able to reach it every time. So you can reach the perfection from, say जैसे यही कंजूसी और एक्स्ट्रा वैकेंस बीच में है दरमियाना खर्चा। So you can reach दरमियाना खर्चा from the miserly side or an extravagant side. So it is better to err on the right side of things. And miserly is a bigger problem than extravagance. खर्चा ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये बेहतर है than conjuicy, because conjuicy has been criticized more than extravagance. Extravagance is bad, it has been criticized. This rule, if you keep it in your heart, that you try to err on the right side, ये जो erring on the right side है, ये आपकी ज़िंदगी के 90% मसले और हल कर देगा। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रेडिशनलिस्ट ये बात कर रहे होते हैं, ये आपको इकोनॉमिक थियरी में भी मिलेगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स का सुपरफिशियल इल्म हासिल किया हो तो आपको एक रूल पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, सो पॉवर्टी लाइन से 100 रुपीज़ अ डे, जो इससे कम कमाता है ही इज़ पुअर। तो अब ये कैलकुलेट करने हैं लोग, मान लीजिए आवर डेटा सेट इज़ यू पीपल, 24 पीपल ओवर हियर, ये डेटा सेट है हमारा, इसमें देखना है गरीब कौन कौन है। अब हमने जब डेटा निकाला तो ये जो अदर्स इन द रूम है, दीज आर द पीपल हु आर पुअर, एंड दोज हु आर अबव, दे आर अबव पॉवर्टी लाइन, फॉलोड बाय स्पीकर्स में जो हैं, दे आर अबव पॉवर्टी लाइन। बट शिवा कॉम्प्लेट्स, ये तारिक साहब मर्सिडीज में घूमते रहते हैं और बीपीएल में रखा है आपने इनको, ये कैसा तरीका है? ठीक, there's an error in our data. Then Arslan says कि सईद साहब is working as an engineer, 90,000 इनकी सैलरी है, ये डेटा ही गलत है। So the economists say an inclusion error is better than an exclusion error when you calculate poverty. क्यों? So that we do not exclude a poor. Let 10 rich get included, that's okay. But one poor should not be left. But sometimes exclusion error is better when you give punishment. तो लॉ में भी, लीगल थ्योरी में भी आपको ये मिलेगा। So you err on the right side. उसमें क्या है? यही रूल का एप्लीकेशन। यही रूल का एप्लीकेशन वहाँ पे है कि 100 ये क्रिमिनल्स फ्री हो जाए, बट एक निर्दोष को सज़ा न मिले। अब इसका रेलेवेंस हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के साथ क्या है? इसका रेलेवेंस ये है, जब तक यू आर नॉट श्योर, फॉलो योर गॉड डैम ट्रेडिशन इवन इफ इट लुक्स ऑब्नॉक्शियस ऑन इट्स फेस। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट कि व्हाई डज आवर कल्चर रिकमेंड सर्टन थिंग्स, व्हाई आर देयर दोज थिंग्स which are in it, if you are not able to understand,
it is better you err on the right side, you stay with your aslaf, you stay with your parents. Okay, I don't get it, my father says XYZ, but my uncle says ABC. I think I need time to understand it. Let me stay with what my community has stayed with. Let me stay with what the tradition stays with. जो बाय एंड लार्ज मुसलमानों ने पिछले 1400 साल से बात कही है, till I am sure about it. I'll give you an example. नुज़ूल ईसा, ऐसा नहीं है it has never been questioned in the history of Islam. But the consensus of this ummah has by and large been, he is going to come. He is going to come again. Now you and me, obviously if one of you is a scholar, then you might hold your own position, that is true. But what about us common people like me, जिनको ढंग से अरबी पढ़ना भी नहीं आता, हम क्या करें? It is better you err on the side of tradition. At least you stand in front of God as a jamaat. तो बात शुरू हुई थी कंजूसी से. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, what affliction is worse than miserliness? इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता आपके साथ अगर आप कंजूस हैं. इसका एक और चीज़ भी वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया. जैसे मूछे रखने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ किया है. अदरवाइज मूछे खुद में इनोसेंट एक्ट है, बट द क्रिटिसिज्म इज सो हार्श दैट वन इज फोर्स्ड टू थिंक इतना क्या कर दिया मूछों ने. तो वैसे ही ये माइजरलीनेस, बिकॉज द रूट्स ऑफ माइजरलीनेस आर इन कुफर, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इतने हार्श टर्म्स में. कैसे है इसके रूट्स कुफर में? बिकॉज कंजूसी हैज़ एन अंडरलाइंग एक्शियम दैट once you spend you might not get it back, and that is not trusting God's bounty, that is not trusting God's rahmah, not trusting barakat, and that's kufr. That's a subtle form of kufr. Yaqeen na hona Allah Ta'ala pe, that He has given you once, He can give you twice. ये यकीन ना होना. तो they are the subtle roots जो कंजूसी के अंदर छुपे होते हैं. इसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें छुपी होती है. I'll give you a few more examples. कंजूसी में एक और चीज़ छुपी होती है कि this earning is mine. That's again a subtle form of kufr. ये मैंने किया है, ये अनानियत की सिंबल है. And God says in Quran कि एक कैमल सुई का जो छेद होता है, the eye of a needle, उससे पास होगा, लेकिन एक एरोगेंट जन्नत में नहीं जाएगा. तो अगर ऐसी बात है, जो चीज़ें आप में एरोगेंस दिखाते हैं, उन चीज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करते. वन ऑफ द वेज इन विच दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर कैरेक्टर इज miserliness, कंजूसी, because you do not trust God's bounty. You think it's your earning. You do not want to give away. There is third aspect to miserliness, which is charity. Who would do more charity? An extravagant person or a miserly person? On a superficial analysis, you might think miserly has more chance of charity, but truth in practice is the opposite. That it is the extravagant who gives up on money easily. He finds a person that chhato isko de do, and he is like that. Even if there is not good niyyah in his heart, there is still more chance of he doing the act. A miserly person would check a million times. मैं जिसको दे रहा हूँ ये तो है ही नहीं गरीब, मैंने वेरीफाई किया. He finds a million ways of avoiding giving charity. He hires a CA to see कि वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है. And he finds ways to decrease his wealth. On paper, not de facto. ज़मीनी सतह पे उसके पास पूरी प्रॉपर्टी होगी. Not that you should be extravagant, but you should err on the right side of things. So miserliness. फिर ये कोट करते हैं इमाम हलवानी को, जो गरीब से अपना गुजारा करते थे मिठाइयाँ बेच के. कहते हैं जब उनके सामने से कोई बुजुर्ग गुजरता था, कोई स्कॉलर गुजरता था, तो he would give them sweets for free.
और फिर उनसे बदले में क्या मांगते थे कि दुआ करिएगा मेरे बच्चे भी आलिम बने. एंड his sons became great scholars. Now इसमें भी एक दिल में मसला पैदा होता है मॉडर्न मुसलमान के कि ये कहाँ से कॉजेलिटी एस्टैब्लिश की कि ये करने से उसको वो मिला. ये सवाल पूछना बड़ा आसान है कि ये करने से कैसे साबित हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस ही बिकेम अ ग्रेट स्टूडेंट और अ ग्रेट स्कॉलर. बट देन anyone who has a basic understanding of philosophy, and those of you who have been attending philosophy sessions with me would by now say कि causality कहीं पे भी establish नहीं होती. You can never establish any causality whatsoever, not even in physical sciences. बॉटल को धक्का दिया और बॉटल गिरी, this is what you know. You don't know बॉटल को धक्का देने की वजह से बॉटल गिरी. You never know the causality. You know the apple fell. You don't know why it fell. You call that phenomena gravity, but you never know the because of it, why of it. You only know the how of it. कि हमने क्या देखा कि धक्का मारा बॉटल को और बॉटल गिरी. हमने ये नहीं देखा कि इसकी वजह से ये गिरी. The causality is always a spiritual act. जिसको कांट ने बोला था it's inside us, it's a priori. तो यहाँ पे भी the spiritual eye is able to discern why something happened. It's able to see why something happened, the great wisdom of happening of things. And the wise man also knows physical causality. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक इक्लिप्स हुआ, उनकी औलाद गुजर गई थी हज़रत इब्राहिम, तो the Arabs उन्होंने शौक मनाया और simultaneously they were also very happy that even the planets, even the nujum, they would call them, even the heavenly bodies, they are participating in our sorrow. This news came to the Prophet that it is not because of my son. It is a natural phenomena. But there are simultaneously other causalities, also spiritual causalities, which God talks about in Quran. That it is not because of this that this thing happened to you. It is because of your spiritual malice that it happened to you. So, moving on, ये कहते थे लोगों से मेरे औलादों के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला ने इनको दे दिया. कहते अपनी दौलत इसकी इज्जत करें, respect it. You can buy books through it. आप किताबें खरीद सकते हैं इससे. And what a beautiful thing. Ask the people who are not able to afford. They will tell you कि दौलत कितनी नायाब चीज़ है. अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया उसका इस्तेमाल करें. As well as concern oneself with having books written. ये आप ज़रूरत नहीं है. पहले ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो किताबें लिखवानी पड़ती थी. अब हम किताबें खरीद सकते हैं. बट दिस एग्जाम्पल इज स्टिल रेलिवेंट. अगर आप यही किताब खरीदें क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यूएस से मंगानी है, लगभग 100 पेजेस की किताब है, 62,000 कीमत था कुछ दिन पहले, 62,000. इफ़ यू वांट टू बाय ये जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रिंट है तबरी का, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है इमाम तबरी का हिस्ट्री, दैट बुक कॉस्ट यू 60,000 रुपीज़. इह्या उलूमुद्दीन फॉन्सविटी की अगर आप खरीदेंगे, दैट बुक कॉस्ट यू लगभग 80,000 अराउंड. नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग एवरीवन कैन अफोर्ड. अर्नोल्ड टॉइनबी की जो ओरिजिनल हिस्ट्री है अब प्रिंट नहीं होती, अब एब्रिज्ड वर्जन है, 4 वॉल्यूम्स का आता है. ओरिजिनल खरीदोगे 40, 50, 60, 70 हज़ार का है. सब लोग एफर्ड नहीं कर सकते. जो एफर्ड कर सकते शुक्र करो अल्लाह ताला का. और यही फिर ये तो बड़े लेवल पे, अब छोटे लेवल पे चले जाएं. इवन ए बुक, जब आपके पास घर में खाना शाम का एफर्ट करना मुश्किल हो जाता है, देन बाइंग ए बुक बिकम्स वेरी अ लक्जरी. इवन इफ इट्स लाइक 100 रुपये की कोई किताब, इट्स अ लक्जरी बिकॉज यू हैव टू चूज बिटवीन व्हाट, फिलिंग योर चाइल्ड्स टमी एंड गेटिंग अ बुक. एंड only a fool would choose a book at such a point. It is more important that this child is nourished. So, use your wealth wisely.
ये कहते हैं मोहम्मद इब्न अल हसन हैड सो मच वेल्थ कि 300 खुदाम होते थे इनकी दौलत को to take care of it. The estate was so huge that there were 300 people who were looking after his estate. But then he spent all of his wealth towards the pursuit of knowledge and learning. पूरा दौलत उन्होंने इसमें सरफ कर दिया. In fact, he did not retain even a single valuable garment. एक भी कपड़ा उन्होंने अपने लिए नहीं रखा. So when Abu Yusuf saw him dressed in his shabby clothing, he sent him some splendid clothes. लेकिन मोहम्मद इब्न हसन डिड नॉट एक्सेप्ट. इन्होंने रिजेक्ट किया. क्यों? गुड थिंग्स कम टू यू इन एडवांस, ही सेड, बट फॉर अस दे आर डेफर्ड अंटिल हियर आफ्टर. हम आखिरत में ले लेंगे अपना हिस्सा. यहाँ पे भी अगर आपको कोई साइकोलॉजिस्ट बोलता तो 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये आपकी ट्रेडिशन में कोई बोल रहा है तो दिल में बड़ा दिक्कत होता है आजकल ये एक्सेप्ट करने में. Ask any psychologist of any salt जिसने 4 ही किताबें क्यों ना पढ़ी हों, या even ask a person who has just lived with a psychologist for a couple of years, he will tell you how amazingly delayed gratification works in your life. It does wonders. अगर आप immediate gratification वाले इंसान रहे हैं, your life is going to be tough. And tough in the sense for you to achieve excellence in life is going to be very difficult. But if you are a person who has always had gratifications delayed, it's a bigger predictor of success in life. And this is a statement, a psychological statement that he has used. And all of such things are there in your traditional wisdom. अब यहाँ पे एक और मसला भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिफ्ट्स रिजेक्ट करना मना किया है. तो इन्होंने ये कैसे किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनकी सुन्नत भी है, he would never reject gifts. He would reject charity though. That's a discussion for other day. That's also a very beautiful thing. हज़रत सलमान फारसी का अगर आपको कन्वर्शन पता है तो आपको वो स्टोरी पता होगी. बट अभी हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं तो और गिफ्ट्स. So what just happened? The Prophet said, take gifts whenever anyone gives you, take it. But he is rejecting it. The Prophet also said, do not debase yourself. Do not abase yourself. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ने फरमाया, believers are not allowed to be debase themselves. And debase मतलब to behave in a way जिससे आपकी इज्जत गिर जाए, कम हो जाए. एंड इसको भी एक्सटेंड करें अपनी ज़िंदगी में. इट डज़ नॉट हैव टू लिमिट विद जिस पे हमारी खुददारी जागती है, क्या हमसे किसी ने कैसे ज़ोर से बात कर दी, कैसे किसी ने गाली दी हमको, हमारी खुददारी सिर्फ इन चीज़ों पे जागती है. डिफेसिंग इंक्लूड्स ऑल्सो द एक्ट्स नॉट डन बाय अदर्स टू यू बट द एक्ट्स यू योरसेल्फ डू. फॉर एग्जांपल, नीच किस्म की लैंग्वेज यूज़ करना. अगर मैं आपके सामने, मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आप सब पे से कोई ऊपर आए, फॉर एग्जाम्पल तारिक साहब आए या मुश्तरी ऊपर आए और मैं तू करके बात करूँ, करने को तो कर सकता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट करेंगे. बट आई हैव डिबेस्ड माई सेल्फ बाई माई ओन एक्ट. सिमिलरली द काइंड ऑफ क्लोथ्स you wear, that's why you will see in all cultures, in all goddamn cultures, you would see this. There's a hierarchy in clothing. जिन कल्चर्स में, जिन ट्राइबल कल्चर्स में क्लोथिंग का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे भी द हाईएस्ट पीपल हैव द बेटर क्लोथ्स. आप देखेंगे उनके पास, फॉर एग्जांपल द बिगर स्कल, वो कहाँ पे रखा जाएगा? जहाँ पे उस स्कल्स को जमा किया जाता है वो रखा जाता है वेयर द एल्डर सेट्स इन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ प्रिमिटिव कल्चर. या जो वो फेदर्स यूज़ करते हैं टू कवर देयर प्राइवेट पार्ट्स, उन feathers में difference होता है than younger ones and then the elder ones. In fact, the difference is such that there are people who are not allowed to wear anything, but then the highest priest, he is most covered. Check any culture. The higher you are in hierarchy, the more covered your body is. So, how you dress, how you speak. Social media पे आप बहुत कम देखोगे people with high character. They are debasing themselves, indulging in
this bakwas talks or these cool selfies. That there is no problem with photographs. A lot of people take them. Traditional people also do it. Nothing wrong with that. But then you would see the difference between the two. एक होता है हरम पाक के सामने भी सेल्फी लेकर कमर चुनासन कुर्मुत खाने का बस कुंतु फोटो शसा या फिर जैसा शर्म निशा हाया. दूसरा होता है जो कुरान खोलता है उस वक्त भी फोटो लेता है कि आई एम रीडिंग कुरान टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एक्सट्रीम, नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो इसको जैसे नॉर्मल. हमजा यूसुफ इज वेरी एक्सट्रीम कि आई डोंट वांट टू टेक एनी फोटो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सट्रीम. नॉर्मल हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ. Some of us take photos and it's perfectly fine. But others are like, I cooked, I did this, I went there, I went to washroom, I went to there, I went this. I'm lonely. Priya is feeling lonely with affable Irfan and 32 others. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. That's also debasing yourself. Debasing yourself includes crying every time when you talk to people. हर जगह अपने सिर्फ negatives बताना. मेरे साथ ये हो रहा है ज़िंदगी में, ये हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा. हर जगह यही नेगेटिव्स अपनी ज़िंदगी के सुनाना. और इसमें भी कुफ्र के हल्के हल्के बीजेस हैं, छोटे छोटे सीड्स. कि ज़िंदगी में खूबसूरती ना देख पाना हो गया दिल में अल्लाह ताला का ज़ोहर ना होना. ज़िंदगी की खूबसूरती को ना देख पाना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्लाह ताला का इल्म ना होना. These are a few things, but there is one important lesson from it, that Muhammad ibn al-Hasan, how did he choose between the two traditions? That is a more important question. The Prophet said, do not debase yourself. The Prophet said, do not reject a gift. Now there is a gift that can debase you. How do you choose between the two? ये वही सवाल है. That tomato is a fruit is knowledge. Not putting it in fruit salad is wisdom. Wisdom guides you. कौन सा follow करे. And wisdom most of the times comes with age. The discerning eye would find which one of the two to use. Now the question is, what about the younger ones? There are certain young people who are gifted with a discerning eye. They are considered wise in their families, in their. हम आम इंसान की बात कर रहे हैं. Once again, exceptions must be there among you people. But some of you and me who do not have a discerning eye, who are not as wise to choose for ourselves, कि अगर हम दोनों के पास हमारे पास ये ट्रेडिशन दोनों आते हैं, हम क्या करते हैं? We would go back to tradition. Again, culture helps. आपके कल्चर में क्या किया जाता है ऐसे केसेस में? आपके कल्चर में जैसे if an unknown person gifts you, you do not receive the gifts. Traditional wisdom in Kashmir. आपको घर में बोला गया होगा 1000 बारी, why did you take it from him? You should not have taken it from him. So your culture solves it. The second thing is, sometimes if the culture is ambiguous or you do not have ilm, then God has given you a very beautiful rule in Quran. If you are in doubt, it's in fact God telling the Prophet even and the Sahaba that if you are in doubt with respect to what we have revealed to you, then ask the people who know. Prophet did exactly the same. When he came down from the cave of Hira, he visited his wife and then they went to Waraka ibn Nawfal, who was a Christian, and asked him, what is it that we saw? And then he told him, okay, it's angel Gabriel that visited you. Hazrat Jibreel alayhi salam tho. So ask the people. Now who are the people who you should ask? The wise. How do you know who is wise? Postmodern thought would want you to believe that you can never know who is wise. But no, it's not like that. You know what's a good movie. You may not be able to define it. You would not be able to define a good song, but you know there are some songs that you like, that there are some songs that you don't like. You will never be objectively able to define what's a beautiful fragrance and what is a pungent smell. You would never objectively define कि इन दोनों में difference क्या है. But you use certain things as ethyl, but you do not use certain things. आपको पता होता है difference क्या है. You know your wise people. आपको अपने खानदान के wise लोग, you know them.
आपको अपने रिश्तेदार में वाइज लोग, यू नो दैम, आपको अपने कल्चर में वाइज लोग, यू नो दैम। आप जब लोग, वेन एवर पीपल ओपन देयर माउथ, यू नो हु इज वाइज, हु इज नॉट। यू may not be able to define it objectively, that's okay. Language falls at a lot of levels. When you tell your zawja, and today zawja क्या आजकल तो सिर्फ गर्लफ्रेंड है, that I love you, you know that you have not done justice with your feelings. You may not be able to define to her what you are feeling, or him, if you are a female, you might not be able to judge it, or tell him exactly what you are feeling right now. But somehow you trust the words. Trust yourself. You know who you should ask. You always know it. ये कहते हैं, it is reported that a scholar Fakhr al-Islam al-Arsabandi, ये क्या करते थे, the rinds of melons, जब आप तरबूज में से उसका वो रेड पोर्शन हटाते हैं, खाते हैं, जो बचता है, that's the rind of melon. He would collect them, and फिर वो जाते थे, उनको धोते थे और वो खाते थे। वो एक औरत ने उनको देखा जो गुलाम थी किसी और की। शी सॉ दिस, और उन्होंने अपने मालिक को कहा कि ऐसे मैंने देखा इतने बड़े स्कॉलर को ऐसे करते हुए। तो हर मास्टर टोल्ड हर कि प्रिपेयर ए ग्रेट मील एंड इनवाइट हिम ओवर टू डाइन, बट Arsabandi did not accept. Why? The reason was he felt that it would debase him. But again, it does not apply to everyone. हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। Now, one more question that may arise is कि ये हर जगह ये सवाल तो आ सकता है कि this does not apply to every occasion, this does not apply to every occasion. How do we solve this dilemma? One method I told you is that culture makes it easy for you. Culture has institutions which solve it for you already. क्या करना चाहिए कहो, ये जो तशुर नर्ड है, करते रहो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कि कहाँ से शुरू करूँ। सामने पापा बैठे हैं, दाएं साइड चाचा बैठे हैं, लेफ्ट साइड अजीज दोस्त है, मगर जामते से को डिसाइड वहीं करो शुरू। अब कल्चर ही डिसाइड करता है। किसी को बुरा नहीं लगेगा राइट साइड से शुरू करोगे तो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो योर कल्चर डिक्टेट्स इट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एट ए मच subtler level in Islam we used to have there were three aspects to it. There still are three, but the third aspect is gone now. We would have Aqidah, we would have Fiqh, and then we would have Tariqah. We would have three aspects to our religion. In fact, there would be books, and they're mainstream books, who would write that this book is in so-so Aqidah, so-so Fiqh, and so-so Tariqah. Tariqah was one of the guiding methods कि हम ये चीज़ करेंगे कैसे। तो that's at a subtler level in religion, but by and large, your culture dictates all of these things. So the thing you are after with an axe to destroy, it's your refuge. ये आपका refuge है जिसको हम सब destroy करने के लिए निकले हुए हैं। So it is essential in the quest of knowledge that one pursue the highest aspiration and do not covet the wealth of other people. दूसरों की दौलत देख देख कर खुद को तड़पाना ज़रूरी नहीं है. Do not covet their wealth, showing a great desire for what others possess. The Prophet said beautifully कि ये जो behavior है इससे बचना, because it is ever present poverty. That means you would never have enough when you covet, because अल्लाह ताला की रहमत दुनिया भर की बरकत है अल्लाह ताला के यहाँ, तो दुनिया में तो हमेशा ज़्यादा होगा आपसे. So you will always be in a state of poverty. And the Prophet said elsewhere that poverty is near to kufr. ये आपको कुफर के करीब ले जाएगी. One should never be miserly with whatever wealth he has. Instead, let one spend it on himself and on others. ये जो others की बात है ना, दूसरों पे खर्चा करना, I don't know how we have missed it now. हमारे यहाँ ये कैसे हम मिस कर गए. हमारे यहाँ ये दोस्तों में काफ़ी हद तक है, but all of a sudden I see lately people becoming बहुत miserly. ये दोस्तों पे खर्चा करना अब अच्छा नहीं लगता. In fact,
if you read Quran, and these are superficial things, you can get into depths of Quran and you can like spend your life on one verse. But I'm saying a superficial reading of Quran where God dictates and asks you to spend on other people. खर्चा करें दूसरे लोगों पे भी. There are verses in Quran where God tells you to do it. दूसरों पे खर्चा करें. और कभी ये करके देखें. You ask your psychiatrists and psychologists, why are you not at peace? And he blames it entirely on your childhood. And this is because he creates that causality. But this is not how we view life. We consider it to be true, what they say, but we say that there are much more things that are there at play. We believe in the spiritual forces as well. We believe that they also exist. Do it once and see the beauty of it. If you do not trust me, ask your mothers this question. What you feel when we have the food which you have cooked? Or ask women around you when they cook a meal and someone is licking his fingers having it. Ask them how they feel. It opens up their chest. It opens up your chest. And the chest that is open is the chest that can receive. The chest that is not open, it cannot receive. So one of the things how your chest would open is by giving. And that's one of the reasons why we used to have weddings where we would invite a lot of people. But now every custom is being criticized. Every custom. And part of the reason is true because customs became liabilities. They were not there to be liabilities. They were there to increase bonds. तो क्या करें अब, वो दोनों चीज़ें मसला ही मसला है हर जगह. खैर, दूसरों पे spend money on people, and you would find yourself at a lot of ease. Do it if you're not having peace of heart. Go out and spend it on a stranger even. Get someone an ice cream. ये छोटे खर्चे आप कर सकते हैं. If you cannot afford, it's okay. But if you can, do it once. अपने friends को take them out for a dinner someday. It is said people are in poverty because they fear poverty. Why? Question. Because again, fear of poverty shows not trust in God. Allah Ta'ala पे यकीन ना हो.